One of the reasons that I praise you, to be very honest, is the fact that you're running a training institute in an area where people lack awareness about the skills. I mean, like, there are two things, we all know that you train the people on the skills, but before than that, you need to make them aware about the skills as well. And we right now sitting in that sort of a territory where people don't have that sort of a knowledge about skills, to be very honest. Right. That which skills will work good, which skills will die off in the future, which skills should be learned first, then you should learn the second and all that, and that's how the whole hierarchy goes. तो आपको ये चैलेंज फील होता है रिगार्डिंग दिस कि जहाँ पे अवेयरनेस की ही कमी हो, जहाँ पे स्किल्स पे पहले अवेयर करवाना हो लोगों को एंड देन ट्रेन देम ऑन द स्किल्स, doesn't it take more time? How challenging is this, I would say? Because if you're doing it already in an established market where the competitiveness is too high, the people are doing an enough job, the people are doing a fine job altogether, वहाँ पे शायद I personally feel like वहाँ पे शायद लोगों को skills पे train करना आसान हो जाए और आपके trainers की भी training करना आसान हो जाए कि these are the new skills coming in the market, we should be able to do that, otherwise we are going to replace you one way or the other, right? But ऐसे एरिया में जहाँ पे you need to counsel the people up at first before giving them the right appropriate skill, identifying that where they are good at, and then providing the skills, and then evaluating them, and then retaining them in a software house. So does it create a long process, in this sort of a territory? And how challenging is it? But other way around, sorry for cutting you out in that, but other way around, this may be beneficial as well, because you train the people on their mindset at first and then train them on the skills at first. So maybe the retention is a bit too high. I feel like a lot of the technical people who are going to listen this out, they might just figure out that how important this question is, to be very honest. That one way or the other, if you train somebody on the mindset at first and then on the skill, that person lasts for a very long period of time. Exactly. I personally have experienced it out. But if you focus on the skill and his mindset has already been developed from school, college, and university, whichever the medium is, that person is harder to retain, right? So is it challenging? Is it beneficial for you? Where do you feel like this part comes into work? Answering this question may take a bit more time because there are 2 or 3 chunks of this question. एक entrepreneurial approach है. Entrepreneurial approach क्या है कि एक आइलैंड है जहाँ पे लोग जूते नहीं पहनते. You have heard of this example कि लोग जूते नहीं पहनते. तो एक तो ऐसा आइलैंड भी है लोग कपड़े नहीं पहनते. वो we cannot sell that. But entrepreneurial approach में एक एंटरप्रेन्योर से पूछा जाता है भाई एक आइलैंड है जहाँ पे लोग जूते नहीं पहनते लेकिन तुम्हारी जूतों की दुकान है, जाओगे? तो वो कहेगा नहीं जाऊंगा भाई, क्योंकि लोग जूते पहनते नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ इट. फिर एक एंटरप्रेन्योर आता है, वो कहता है यार मैं जाऊंगा, मैं वहाँ पे नीड पैदा करूंगा और मैं वहाँ का अकेला जयकांत शिकरे बनूंगा. ठीक है. सो आई एम द वन हु इज हैविंग द सेकंड ओपिनियन. आई विल गो देयर एंड आई विल बी द जयकांत शिकरे. Now, second part of this, the second chunk of the answer is कि मेरी अप्रोच क्यों थी फैसलाबाद से स्टार्ट करने की? आई वॉज जस्ट वॉन्टेड टू ब्रिज द गैप बिटवीन द प्रैक्टिकल एंड द टोल्ड नॉलेज. दैट इज व्हाट आई डिड व्हेन आई स्टार्टेड बैक इन 2018. Go, it's just like an open challenge. Go, Google it, Facebook it, and see if someone is selling digital marketing course. There is no one. If someone is selling SEO course with that diverse curriculum, only I was there. So I took this challenge to bridge the gap between the practical and knowledge world. होता ये था कि हमें ट्रेनिंग सेंटर में कीवर्ड रिसर्च पढ़ाई जाती थी और कहती थी बाय बाय दिस इज SEO. What I did, I just made them realize कि भाई ऑन पेज SEO क्या है, ऑफ पेज SEO क्या है, टेक्निकल SEO क्या है, ग्रे हैट SEO क्या है, ब्लैक हैट SEO क्या है, व्हाइट हैट SEO क्या है, SEO है क्या? ये 10,000 का कोर्स नहीं, ये 25 या 40,000 का कोर्स क्यों है? फिर डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी बिगर देन SEO. What people used to say, जब किसी के पास इंक्वायरी लेने जाता था ट्रेनिंग सेंटर में कोई, तो लोग कहते थे कि यार SEO कर लो, डिजिटल मार्केटिंग ही है. Is this a joke you are cracking? And they were ruining their, you can say, careers. सिर्फ SEO के नाम पे डिजिटल मार्केटिंग, गेस्ट पोस्टिंग के नाम पे SEO के नाम पे गेस्ट पोस्टिंग पढ़ा देनी, डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे SEO पढ़ा देनी. I changed the, you can say, dimensions of the trainings. मेरे पास 13 modules डिजिटल मार्केटिंग के. No one can bring that. और वो क्यों थे? Because I was the guy जिसको पता था डिजिटल मार्केटिंग क्या. So the training centers, they don't know digital marketing क्या है. वो बस सुनते हैं, हवा में गूगल करते हैं, करिकुलम निकालते हैं, पढ़ाना शुरू कर देते हैं. अब
प्रॉब्लम ये था कि मैं वो गैप को ब्रिज करना चाहता था, एंड वी डिड दैट सक्सेसफुली. वी ग्रेजुएटेड अराउंड 13,000 स्टूडेंट्स इन 5 years. एंड हम फ्री ऑफ कॉस्ट गए. हमने, जिसको आप बोल रहे थे मार्केटिंग कैसे करनी, हमने कमर तोड़ दी मार्केटिंग से. कैसे? वी सोल्ड द कोर्स इन 1,000 rupees, and we are the one who are selling the course in 1 lakh rupees. We you can say past the journey. We did this from 1,000 to 1 lakh in just 4 years, and doing the marketing style, marketing strategy, and all of the stuff we had in our mind. अब ये सारी बातें मैं क्यों आपके साथ कर रहा था कि ये एक अप्रोच थी कि एंटरप्रेन्योरल. दूसरी अप्रोच थी कि भाई मेरी पर्सनालिटी ये कहती है कि मुझे ये चैलेंज लेके इसको गैप को फिल करना है. नाउ कम्स द थर्ड पार्ट कि अगर ये ट्रेनिंग्स में दे रहा हूँ तो इसको मैंने पोटेंशियली इस्तेमाल कैसे करना है. देन देयर कम्स द सॉफ्ट हाउस पार्ट कि मैंने सॉफ्ट हाउस में उनको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. हमें जॉब मिलेगी, हमें काम सिखाया जाएगा, इंटर्नशिप दी जाएगी. वी कवर दैट पार्ट ऑलरेडी कि भाई आ जाओ, बैठो, सीखो, इंटर्नशिप करो, फ्रीलांसिंग करनी फ्रीलांसिंग करो, द वर्ल्ड इज योर्स. हम क्या सिखाएंगे? हमारे साथ अगर कोई बंदा कहेगा कि काम करना है, गेट थ्रू द इंटरव्यू स्टेज. इंटरव्यू, वो कहता नहीं इस बार पेपर मैं खुद सेट करूंगा, तो इंटरव्यू फिर मैं खुद करूंगा. सो इंटरव्यू, इफ दे आर नॉट एबल टू क्लियर, दे आर आउट. एंड इफ दे आर एबल टू क्लियर, दे आर क्लियरिंग द टेस्ट, दे आर क्लियरिंग द इंटरव्यू, दे आर इनटू द टीम. अब हमारा ही ट्रेन स्टूडेंट हमारे ही प्रोसेस से दोबारा क्यों गुजर रहा है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ट्रेनिंग इज समथिंग एल्स, प्रोफेशनल लाइफ इज समथिंग एल्स. एज यू सेड, माइंडसेट प्लस स्किल सेट, और आपने बोला कि माइंडसेट एंड स्किल सेट. हम लोग माइंडसेट प्लस स्किल सेट पे काम कर रहे होते हैं. मेरी एक दफ़ा इस लेवल पे चली गई क्लास में डिस्कशन. आई यूज्ड टू टीच आइल्स एज वेल. सो इस लेवल पे चली गई कि आई वाज जस्ट टेलिंग देम दैट इफ यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, you need to know how to pronounce English. That vocabulary is not going to be helpful if you do not know how to use that vocabulary. So when I was teaching them, so I was just making them realize that personality development is the most important part in English communication. And that I was telling them, it was just like 4th week of the class, and it was just like 3rd session of personality development, and one of the student came to the program coordinator and said कि सर तो personality development ही पढ़ाते रहते. The point was, which he didn't realize, कि अल्लाह की बंदी, तुम औजार पकड़ तो लोगे, चलाना ही नहीं आता, तो कैसे चलाओगे? ठीक है. सो अल्टीमेटली हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर का, जैसे मैंने आपको ब्रिज करना है गैप को, तो उसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई आपको वेब डेवलपमेंट तो सिखा दी, वेब डेवलपर को वेब डेवलपमेंट बेचनी किसने सिखानी? वी गिव देम दैट माइंडसेट कि भाई बोलना भी सीखो, तमीज करनी भी सीखो, क्लाइंट को जवाब कैसे देना ये भी सीखो, आगे प्रेजेंटेशन दो अपने प्रोजेक्ट की. That is how Technolinks went to the lens for the students, and we successfully graduated numerous people, and we became one of the biggest training centers of Islamabad. Having more branches was one factor, graduating more students was another factor, but the third factor was we had branding. We did those things for the branding and marketing side, which never, the training centers never applied. Like we did PIPC just to market ourselves. तो क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड से था, तो आई हैड दीज थिंग्स इन माई माइंड, एंड एंटरप्रेन्योरशिप को मैं समझता था. मुझे पता था कि किस तरह से चीज़ें, प्रोसेस किस तरह से काम करते हैं. सो थिंग्स वर्क फॉर अस अल्हम्दुलिल्लाह, एंड it is more beneficial, as the crux of the, you can say, answer is, it is beneficial.